Can you please, uh, good evening, Deepika. Your Good evening, sir. your interview for State Bank of India credit analyst, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Is on which date? It is on 7 June. In Delhi? No, sir, it is in Kolkata. Acha, it is in Kolkata. Good, good. Excellent. Madam, can you please tell us about yourself briefly? Sir, my name is Deepika Aswani. I have more than 6 years of experience in credit, and I am currently working at Bank of Baroda at Kolkata. And previously, I have also worked at Punjab National Bank for more than 5 years. And I am chartered accountant by profession. What are your strengths? Sir, my strength are I am hardworking and I am focused towards my goal. Yeah. अच्छा आप पंजाब नेशनल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों गया है? अब तो अच्छा ही बैंक में था, उधर से इधर आने का रीजन क्या था? Sir, is at PNB I was in scale 1 and in Bank of Baroda I am scale 3. अच्छा, PNB you were in scale 1 for such a long time, 5 years. Yes, sir. Actually, I got married and then my daughter, I was on maternity then. Oh, Then at Corona time and all that. oh, that is why you could not go for. Did you appear for promotion test interview or not? Sir, I appeared, but Not they selected. didn't select. Not selected because of my maternity leaves actually. Acha, because of maternity leave. Correct. That is correct. Now you are with State Bank of India. So can you describe about your branch? What is the total business of the branch? And yeah, Total business of branches are 986 crore, and it's a mid corporate branch, and we have only loans related work. We don't have deposits and all. अच्छा, आपका ब्रांच में डिपॉजिट्स नहीं होता है? डिपॉजिट सर वो लोन्स वाला ही होता है, मतलब जो फिक्स डिपॉजिट्स और वो सब बीसी के अगेंस्ट होता है, मतलब नहीं, मगर मतलब कोर बैंकिंग नहीं होता है, मतलब वो हाँ। नो, आपका पॉइंट ये है, आपका पास कोई कस्टमर को 100 करोड़ फैसिलिटी दिया तो उनको तो कुछ करंट अकाउंट होना चाहिए, उनका स्टाफ का अकाउंट होना चाहिए, ये सब ऐसा नहीं रखा है ना क्या? करंट अकाउंट तो सर, करंट अकाउंट तो नहीं होता हमारे, मतलब पास में ब्रांच है उसका होता है, मतलब करंट अकाउंट भी नहीं रखता हमारे को। So that means you are in charge of distributing of advances, and the advance availment will be done in the nearby branch, na? नो सर, अवेलमेंट इज डन देयर बट करंट अकाउंट दे डोंट No, ओपन। अभी देखिए, अरे भाई आप तो ओवर ओसीसी देते हैं, ओसीसी देना तो रोज तो काम करना पड़ेगा, रोज जमा देगा, रोज पैसा निकालेगा, ये सब काम आपका ब्रांच में होता ही नहीं था ना क्या? ओसीसी मींस ये नेफ्ट आरटीजीएस। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट नेफ्ट आरटीजीएस। अरे, एक कंपनी को अपने ओपन कैश क्रेडिट लिमिट दे दिया तो उनको उसको अवेल करने के लिए तो रोज का काम चलना पड़ेगा ना? और आर यू गिविंग ओनली टर्म लोन? No, sir. CC account was also there in our branch. Operation also do. देन कैश काउंटर भी होगा? No, sir. Cash counter नहीं. अच्छा, कैश काउंटर ही नहीं? अच्छा, तब आपका ब्रांच में जो लोन अवेल किया है उनको कैश वगैरह डीलिंग करने के लिए वो पास में ब्रांच में खोलेगा ना क्या?
सर एक्चुअली वहाँ ऑपरेशन में तो मतलब ये नेफ्ट आरटीजीएस यही होता है, मतलब बड़े अकाउंट से, मतलब छोटे अकाउंट्स नहीं है, तो कैश का ऐसा नहीं होता है मतलब रिक्वायरमेंट अच्छा कस्टमर को। अच्छा। और कस्टमर को, नो नो, आप आपका ब्रांच में वो नहीं करता होगा, लेकिन उनको तो जरूर कैश अकाउंट रखने वाला एक ब्रांच होगा, बैंक होना चाहिए ना। बिना बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट कैसे काम चलेगा? कहीं ना किसी काम के लिए तो कैश लेना पड़ेगा। एक कंपनी लेबर चार्जेस, कूली चार्जेस, ये सब कैसे पेमेंट करेगा बताओ? सर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स आर कंसोर्शियम अकाउंट्स, तो मतलब मतलब वो ये कि किसी में है, किसी हमारे ब्रांच में नहीं है, अदरवाइज दूसरे बैंक में हो सकता है। अच्छा, दैट्स ओके। सो योर ब्रांच इज हेडेड बाय एजीएम और डीजीएम? सर एजीएम। AGM. अच्छा अच्छा। How many chief managers are there in your office? 4 चीफ मैनेजर्स आ गए। How many senior managers like you? सीनियर मैनेजर्स और 3। Three. अच्छा अच्छा. Good. यस। So now, madam, can you यस सर। describe your normal day in State Bank of India? नॉर्मल डे इन बैंक ऑफ बड़ौदा सर। अच्छा अच्छा. You are now in Bank of Baroda? Oh, sorry, sorry. I mistook it as State Bank. You are now in Bank of Baroda. I'm very sorry. यस। You are in यस Bank सर। of Baroda. Please tell me your normal day in Bank of Baroda. नॉर्मल डे तो सर मतलब we do process, I do processing of proposal as well as routine work means regarding the EOI और means जो भी सर आता है ये नॉर्मल रूटीन वर्क जो आता है ये एक्सचेंज मैडम, ऑफ। आप ऐसा आंसर करने से, डू यू थिंक योर गुड इम्प्रेशन विल बी क्रिएटेड? थोड़ा मसाला ऐड करके आपने थोड़ा रोसीली प्रेजेंट करना है ना। यू नो, आई नो यू कैनॉट मैनेज without that. You are a banker, you have been a banker for so many years. Should you not describe it properly and make them understand that you are enjoying the work, and you are good in work, and it is worth taking you into our bank? am I यस। making it clear? Am I making it clear? uh, आपको समझ रहे हैं ना? कोई हाँ थोड़ा सर, यस सर। नो समझ सर। गया ना? हम्म। हाँ, बताइए। नाउ गिव मी अ हम्म। बेस्ट आंसर। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, हमारा कोई तकलीफ नहीं, बिकॉज हम्म। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो लोग हिंदी में ही बात करेगा। सो दे अच्छा अच्छा। डोंट माइंड यू आर टॉकिंग इन हिंदी. So moment you ओके। feel comfortable in Hindi, you can get over to Hindi. And then even बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या किया, हिंदी में बात किया नहीं किया उन्होंने इंटरव्यू में? सर वही मिक्स ही था सर, एक्चुअली मिक्स था। मिक्सड होगा, मिक्सड होगा। मिक्सड में मैक्सिमम विल बी हिंदी, मिनिमम विल बी इंग्लिश. ओके। सो ओके। आप हिंदी में बोलिए, आपका एक दिन का काम इन बैंक ऑफ बड़ौदा एज स्केल 3 मैनेजर ऑफ से क्रेडिट एनालिसिस, बताइए. सर एक्चुअली मीन्स मीन्स सबसे पहले ब्रांच का मीटिंग होता है, मतलब ब्रांच में हम जाते हैं तो कि हम्म व्हाट विल बी द वर्क टू बी डन बाय टुडे इटसेल्फ। हम्म एंड देन वी मतलब देन आई स्टार्ट माय वर्क एंड आई डू मैक्सिमम पॉसिबल आई विल, मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि जितना हो सके उतना हो जाए मेरे से काम उसी उसी दिन ही, मतलब आई आई प्रायोरिटाइज माय वर्क एंड तो दूसरे दिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। हम्म. No, okay. I'm putting a question differently. अच्छा। Saturday was a working day for you? नो सर, Yesterday? सैटरडे वाज हॉलीडे। अच्छा. फ्राइडे में आपने हाँ। क्या क्या काम किया है? What were the don't tell me the names of companies. Tell me X हम्म। company, what was the work you were doing? What was the important contribution made by you on that day?
Okay. On Saturday तो Saturday नहीं, it's a Friday. oh, sorry, Friday. On Friday I was doing a proposal, and For which, in that I was um, in that I was see, actually, how you should describe this. On Friday, I was processing a proposal of a company dealing in this, dealing in trading, dealing in manufacturing. They are into this line. This is a company that was established so many years ago. They are having okay. accounts with us for a long time. So their account review, I had to do it on that day. Was it review or was it renewal or a fresh account? But it is a fresh account. Acha, then you say it's a fresh account. All these days they were having account with other public sector banks. Now they are coming over here. And this company has had a very, so what is the details about the company? You did not tell the name of the company. They actually do this type of business. And the directors, it has so many directors. It has so many branches, and they have approached us for this much facility. So they have submitted papers to us. So we have taken the balance sheet of the last 3 years, whatever it is, and whatever pro, proposal format आपने फिलअप करना है वो सब फिलअप करके हम लोग ले लिया. देन ऑन फ्राइडे हमने ये प्रोसेस को, ये प्रपोजल को प्रोसेस करता था. And since वो लोग term loan चाहते थे, so I was working out the various ratios. I was finding the what is the debt service, something like that. आप बात करना है. अच्छा. सर ठीक है. Now, could you follow what I am trying to explain? Yes sir, yes sir. Hmm. I know. See, in the routine course of things, we are not supposed to discuss in detail about the name of company and other things to others. But this is general information. This is asked to find out, are you enjoying your work? Okay. Are you doing your work knowingly? और खाली आप जो बोलता है वो करके आ जाती है. ये फाइंड आउट करने के लिए तो this type of questions are being asked. HR questions are asked. Well, for you mainly HR questions will be there to find out, do you like challenges, do you like work, do you like putting forth more than what you are now putting forth, like that. ये सब find out करने के लिए तो कोशिश होगा. Okay sir. अभी I think you are not ready for this question now. Maybe I will come to it second time when you come to me for mock interview. Okay. Yes sir. I know you are not fully prepared for this. Now, let me come to your own subject. See, in the matter of credit, can you tell me what are the qualities required for becoming a successful credit analyst? I know you are a successful credit analyst. Please tell me what are all the qualities that are required. This also you may not be prepared, I know, because you would not have expected. Were you not getting such questions in the Bank of Baroda? In one form or the other, तो एक क्वेश्चन आना था. What is the qualities required? आपका पास वो है ना क्या? हम क्यों आपको सेलेक्ट करना है? ये सब तो क्वेश्चन in different forms it has to come. आपको Yes आया sir. ना? हाँ, No था sir, ना? नहीं वो तो नहीं पूछा था, नहीं उस टाइम नहीं आया. अच्छा. What were the questions they asked you? They asked me actually regarding the promotions. They asked me कि why you were not promoted at PNB, Hmm. and they asked me regarding the ancillary business, कि third party product कैसे बेचेंगे, मतलब Hmm. वो पूछा था. और ये Hmm. बाकी सर रेशियो शायद पूछे थे, अभी याद नहीं है तो फिर टाइम हो गया तो ये दो क्वेश्चन तो पूछे थे. Hmm.
Can you tell me what are contingent liabilities and commitments? Contingent liabilities are shown are the liabilities which are shown outside balance sheet, and they will at the example, the bank guarantee is shown as a contingent liability, which is shown at contingent commitment at footnote. We show them. Hmm. These are Hmm. Madam, you are not prepared for the interview. Am I right? yes, sir. I am preparing, but Hmm? I am preparing for the interview, but Answers नहीं आता है. नहीं आंसर आता है. No, I am feeling ashamed. I am not that very competent to comment on a successful person like you who is a chartered accountant. But some issue is going on in your mind that prevents you from coming out openly to discuss the issues. That is the reason. I don't know. Or perhaps you are expecting straightforward questions like, say, what is ratio analysis? आप वो expect करते हैं ना क्या? हाँ सर, वो तो कर दिया प्रिपेयर. एक्चुअली वही डे टू डे तो वही डीलिंग होता है, इसलिए अच्छा, मतलब तब तो रेशियो एनालिसिस का बारे में हमको बता दीजिए. And also tell me what is the limitation of ratio analysis. लिमिटेशन लिमिटेशन रेशियो एनालिसिस तो अभी एनालाइज द रेशियो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Current ratio, this should be 1.33:1, and D ratio जो कि डेप टू एक डेप टू Equity. नेटवर्थ, डेप टू नेटवर्थ एक्चुअली सर. Hmm. we हाँ, डेप टू नेटवर्थ इज should be 2:1, or some companies should be 3:1. Hmm. And ICR, interest coverage ratio, we so IBIT upon interest, Hmm. means repayment obligation of the, means interest repayment, means कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो देख पाते हैं उसमें, Hmm. मतलब प्रॉफिट से. और ये and then we can profit upon sales ratio, in which we see के कितना अर्निंग हो रहा है, मतलब ईयर टू ईयर वी चेक कि कितना वो परसेंटेज है, मतलब प्रॉफिट Hmm. अपॉन सेल जो है, रेवेन्यू अर्न हो रहा है. Hmm. Correct. Hmm. DSCR रेशियो, टर्म लोन वी यूज, जिसमें प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट करते हैं. उसके अंदर हम वो 1:1.5:1 होना चाहिए. उसमें पता लगता है कि ये कंपनी अपना रिपेमेंट कर पाएगा अपना, मतलब लोन, और मतलब पूरा इंस्टॉलमेंट का वो प्रॉपर कर पाएगा नहीं कर पाएगा. Hmm. और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, जिसमें से मतलब जो एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री होता है, जिसमें Hmm. कितने पूरे साल भर में कितना उसने रूट टर्नओवर, मतलब वो होगा, रूट होगा, वो बताता है वो. Mhm. और Hmm. डेटर टर्नओवर रेशियो होता है, उसमें क्रेडिट सेल्स से डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स होता है. वो Hmm. वो भी रूट वो बताता है कि साल भर का बताता है वो. Hmm. और एक क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वो भी परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर होता है. Hmm. Acha, now please tell me what is the defect of these
going through this ratio analysis. What aspects ratio analysis cannot tell us? What This is aspect? this is a very theoretical question which you must have studied in your CA. जरूर पढ़ा होगा. What are the things that ratios cannot reveal? Limitations of financial statements. Ratios are based on the information which has been recorded in the financial statements. As indicated, the financial statements suffer from a number of limitations. The ratios derived from there, therefore, are also subject to those limitations. For example, non-financial charges, change in management of the company, etc. Ratios alone are not adequate. Ratios are only indicators. They cannot be taken as final regarding good or bad financial position of the business. Other things have also been seen. For example, a high current ratio does not necessarily mean that the concern has a good liquid position. In case current assets mostly comprise of outdated stocks, window Yes. dressing. On account of such a situation, the presence of a particular ratio may not be a definite indicator of a good or bad management. For example, a high stock turnover ratio is generally considered to be an indication of operational efficiency of the business, but this might have been achieved by the unwarranted price reductions or failure to maintain proper stock of goods. Problem of price level changes. Financial analysis based on accounting ratios will give misleading results in the effect of changes in the price level are not taken into account. No fixed standards can be laid down for ideal ratios. These are the limitations. Thank you. So that is okay. Now let me go for the next question. Hmm. Are you dealing with foreign exchange advances also in your branch? Yes, sir. We have foreign exchange. Yes, sir. We Hello, have LC of BG. Yes, sir. मतलब हाँ, yes, sir. We have LC foreign exchange. LC. LC as well as PC and yeah. पैकिंग क्रेडिट देते हैं? पैकिंग क्रेडिट हाँ सर देते तो हैं. देता तो है. पैकिंग क्रेडिट का बारे में कुछ पॉइंट्स बता दीजिए हमको. How to पैकिंग how a banker should ensure that a packing credit account doesn't become an NPA. पैकिंग क्रेडिट दो मतलब it divided into two parts. It's pre-shipment and post-shipment. Uh, Pre-shipment is when मीन्स जो वो है कस्टमर है वो सॉरी ये जो हमारा बैंक का कस्टमर है वो पहले रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके और प्रोडक्शन प्रोडक्शन तक पूरा करेगा एंड वो शिपमेंट इज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट टू डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इट्स Hmm. बिल मतलब पेमेंट सॉरी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. मैडम एक मिस्टेक आपने बोला था. पैकिंग क्रेडिट मीन्स प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट नहीं है. पैकिंग क्रेडिट refers to प्री शिपमेंट क्रेडिट only. What's a pre-shipment get converted into post-shipment? No, but what is packing credit? Packing credit is a pre shipment credit given to Okay. exporters for purchase of raw materials, manufacturing, and then exporting of the same. Post shipment credit comes at a later stage. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, what do you know about FEMA? Is for Foreign Exchange Management Act. Hmm.
Is it of their day-to-day use for bankers? In what way it is of use for the bankers? उसमें जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में होता है। Hmm. और ना ये A FEMA deals with what? और No, actually, in interview situations, questions will be broadly like this only. So you must be able to talk about the various topics: what, why, where, which, how, who, like that. Every 7 W's aspect of all the questions, you must be able to talk. For example, what is foreign exchange management? Why foreign exchange management? What are the various things covered under the foreign exchange management? ऐसा देख के आपने खाली विकिपीडिया में देखने से भी हो जाएगा। ओके सर, अदरवाइज आपको बैंक का बुक में भी होगा, उसमें भी देख के आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है सर। So थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिए, next time when we meet you must be able to answer me still better. यस सर, यस सर। Now shall I give a very simple question? How would you explain the loan process to a new client? लोन प्रोसेस तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आस्क, मतलब means first we will ask him regarding his requirement and what is the facility he requires, as well as the rate ROI which he requires, as well as we मतलब हम देखते हैं कि उसका एग्जिस्टिंग कितना आरओआई चल रहा है, एंड देन उसको कितना चाहिए, मतलब वो, और अगर उतना, मतलब फिर हम क्या करते हैं कि उसका सैंक्शन लेटर लेते हैं, एंड देन उसी, मतलब कंसोर्शियम अकाउंट या मल्टीपल बैंकिंग में, मतलब उसी रेट को हम, उसी रेट या उससे कम रेट ही उसको ऑफर करते हैं, एंड देन Okay, last question. What is consortium lending and what is the role of a consortium bankers? सर, कंसोर्टियम लैंडिंग वो लैंडिंग है जहाँ पे ग्रुप ऑफ बैंक्स कम टुगेदर, एंड नहीं सॉरी, मतलब एक लीड बैंक होता है जो कि पूरा असेसमेंट करता है लिमिट का, एंड फिर मतलब कस्टमर अप्रोच अदर बैंक्स ऑल्सो कि ये लिमिट जो उसका असेस हुआ है उसके अंदर मतलब होता है सारा जो एलोकेशन लिमिट है, और ना उसमें कंसोर्शियम मीटिंग होती है एवरी क्वार्टर, एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वहाँ, कंपनी का कंडक्ट भी डिस्कस किया जाता है और बाकी चीजें भी डिस्कस की जाती है, विजिट्स सारी मतलब एक साथ ही होती है, सारी बैंक साथ में करती हैं, और ना इसके अंदर रिस्क जो है कवर हो जाता है, मतलब कुछ कहीं प्रॉब्लम चल रही है किसी बैंक में जो भी है तो वो डिस्कस होता है, तो मतलब कंसोर्शियम एडवांस ज्यादा सिक्योर है, मतलब क्योंकि वहां पे मल्टीपल बैंक, बहुत सारी बैंक्स एक साथ आगे जुड़ती है वहां पे, और उसको फाइनेंस करा जाता है कस्टमर को, एंड Hmm. 1 minute. Hmm. Just a minute. Yeah, I have given you a link in the credit officer questions paper, a link of that is giving about concept of consortium, and आपका आंसर सही नहीं है, आपका आंसर sufficient नहीं है. You have to go through this and get to answer me, because there are so many other points like concept of consortium financing, comparison with the loan syndication. So many things can be asked in this. So I request madam to prepare still more seriously. And then when you are ready for taking another mock interview at a similar time, say around 8:30 or 9, you can ask for Samai
3 or 4 days beforehand so that I can allot that and you can answer those questions. But you are a very sure candidate provided you take interest in answering the way you were answering. हमको थोड़ा लगा था you are not keen on properly answering things. I may be wrong, 100% wrong, but or maybe some issues that are there in your mind which prevents you. So please prepare and come Yes, again sir. for another mock interview. 1 minute.